Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part 2 English Literature class. Today we are going to discuss P.V. Shelley's poem Ode to the Skylark. As we already talked about this poem, that the poet dedicates this poem to the Skylark who is singing happy notes. He is very much delighted with the voice of the beautiful song of the Skylark. He wants to learn the secret of Skylark's happiness. And he says that we human beings are surrounded with the miseries and misfortunes in our life. We cannot enjoy the same kind of bliss which this bird enjoys. He compares the skylark with various objects like the rose, the rays of the sun and the moon, etc. यदि हम बात करें पीवी शैली की पोएम ओड टू द स्काईलार्क के बारे में, तो ओड टू द स्काईलार्क के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पोएम कवि ने स्काईलार्क के लिए लिखी है। स्काईलार्क एक पक्षी है जो कि आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और कवि कहता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी मिजरीज और मिसफॉर्च्यून्स होते हैं, दुख से भरा हुआ है, यातना से भरा हुआ है हमारा जीवन, और हम चाह कर के भी स्काईलार्क के जो हैप्पी नोट्स हैं उनको नहीं अचीव कर सकते, उसकी तरह हैप्पी नहीं रह सकते, उसकी तरह मधुरता हमारे जीवन में नहीं हो सकती. So now let us come to the remaining part of this poem. Yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. Yet even after all these things, if we could be free from the scorn for the others, hatred for the people, pride and fear, the worst of human weaknesses, if we are devoid of our scorn, hate, pride and fear, then only perhaps we can attain the happiness of the skylark. If we were things born not to shed a tear, even when exempt from hate, pride, fear, sorrow, human joy could not equal the bird's joy. यदि हमारे अंदर ये सभी अवगुण भी समाप्त हो जाएं, घृणा, घमंड, भय, दुख आदि समाप्त भी हो जाएं, तब भी हम स्काईलार्क पक्षी की भांति आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते. Not to shed a tear, when we are not shedding even a single tear, when the tears are not coming from our eyes, when the tears are not flowing from our eyes, when our eyes are devoid of any tears, we are not shedding tears. Shed मतलब गिराना, आंसू गिराना, roll down the tears from our eyes. I know not how thy joy we ever should come near. I don't know whether we can attain your happiness or not. So the poet in these lines, the poet aspires for the poetic powers of the bird. The poet analyzes the causes of man's unhappiness. Man is unhappy because of our life in this world is ruled by bad qualities like hatred, pride and fear instead of love. The skylark is filled with love. The poet says that man's life is one unmixed scene of sorrows, fears for the future, regrets for the past, and disappointments in hopes that cannot be realized. Clamped down with sadness, the happiest occasions of man's life. Even in the field of poetry, our best poems are those that are the most pathetic in sentiment. The poet says that human happiness is marred by the feelings of hatred, pride, fear, etc. Human beings are born to suffer sorrows and griefs and to shed tears over their misery. Even if it were possible for human beings to cast off hatred, pride and fear from their hearts, and even if there were no sorrows in the life of human beings to make them weep,
even then they would not be able to enjoy that supreme happiness which the skylark enjoys. The poet says that hatred, pride and fear are the cause of human unhappiness. कवि कहता है कि वो स्काइलार्क पक्षी की काव्य प्रतिभा को प्राप्त करना चाहता है। कवि मनुष्य की दुखी अवस्था का विश्लेषण करते हुए कहता है कि वह घृणा, घमंड, भय जैसे दुर्गुणों का शिकार है। उसका जीवन प्रेम की भावना से संचालित नहीं होता है जिस प्रकार से स्काइलार्क का होता है। वह कहता है कि मनुष्य का जीवन दुखों का एक दृश्य मात्र है। भविष्य के विषय में चिंता, भय, भूत के विषय में पछतावे के भाव और आशाओं के विषय में निराशा के भाव मनुष्य के सबसे अधिक सुख के अवसरों को भी दुख के बोझ से दबा डालते हैं। कविता के क्षेत्र में भी हमारे श्रेष्ठ गीत वे हैं जो कि भावनाओं में सबसे अधिक दुख मिश्रित हैं। घृणा, अभिमान और डर मनुष्य की सच्ची खुशी को दूषित कर देती है। मनुष्य पैदा ही कष्ट और मुसीबत झेलने के लिए होता है और दुखों पर आंसू बहाता है। यदि मनुष्य जीवन में कष्ट और संताप नहीं भी होते या मनुष्य घृणा, अभिमान या डर जैसी बुराइयों को भी छोड़ देता तो शायद उसका जीवन आंसू बहाने के लिए ना भी होता तो भी उसकी खुशी इतनी स्वच्छ और पवित्र नहीं होती जितने की स्काइलार्क की होती है। Better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were, thou scorner of the ground. Better than all measures. Measures means music. Your music is far much better than all the music that is composed by the human beings of delightful sound, because it is filled with happiness. It is better than all the pleasant music of the earth. Treasures, better than all treasures. Treasures, knowledge of the world, the ground realities that in books are found. Thy skill to poet were, thou scorner of the ground. Scorner of the ground, the skylark which flies high from the earth and does not keep contact with the earth. It is the scorner of the ground. It does not like the ground realities. Shelley wanted every heart to be ruled by love instead. The poet says that although such a state is inconceivable, yet supposing that if it were possible for man to rise superior to the malignant and violent passions of the human breast, such as hatred, pride and fear, it would still be impossible for man to attain to such a state of perfect joy as the skylarks. Supposing that man by his very nature were incapable of sorrow, it would still be impossible for us to equal the state of perfect joy of the skylark. The poet says that poets would derive greater profit from a study of the skylark's powers of harmony than from studying the most melodious strains or the richest thoughts and feelings contained in the books. कवि कहता है कि यदि प्रत्येक हृदय प्रेम से भरा हुआ होता तो शायद हम स्काइलार्क की भांति आनंद से परिपूर्ण होते। यद्यपि यह स्थिति मानव जीवन में संभव नहीं है, फिर भी मान लो कि यह संभव हो कि मानव हृदय घृणा, घमंड और भय से ऊपर उठ सके, तो भी यह संभव नहीं कि वह पक्षी के श्रेष्ठ आनंद के स्तर को छू सके। मान लो प्रकृति से मनुष्य में दुख के भाव पैदा ही ना होते, तो भी यह असंभव है कि हम स्काइलार्क पक्षी के श्रेष्ठ आनंद के बराबर परिपूर्ण अवस्था को, आनंदपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते। कवि कहता है कि यदि कविगण स्काइलार्क पक्षी के गाने की हार्मनी की शक्ति का अध्ययन करें तो उन्हें जो लाभ मिलेगा वह सर्वाधिक मधुर संगीत में गीतों के अध्ययन से या श्रेष्ठ विचारों और भावनाओं के अध्ययन से जो कि पुस्तकों में मिलता है उससे भी प्राप्त नहीं हो सकता। Teach me half the gladness that thy brain must know. Such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. Teach me half the gladness. The poet wants to know what is the secret of the skylark's happiness. Teach me half the gladness. The poet's modest demand is that the world
should teach him the source of his happiness. He will be satisfied if he could be half as happy as the bird is. That thy brain must know, that you know the secret of your happiness. What is the secret of your happiness? Such harmonious madness from my lips would flow. If I know the secret of your happiness, I will sing about that. Such harmonious madness from my lips would flow. I will always sing about the harmony that you have in your life. The world should listen then as I am listening now. Then the world will listen to my stories of happiness as I am listening to your beautiful song. The poet asks the skylark to make him happy like itself. If he felt half as happy as the skylark was, he would be inspired to write poetry of ravishing sweetness. The whole world would then listen spellbound to him, just as he was listening to the skylark's songs. If he were to feel half as delighted as the skylark, he could write poems that would hold the world spellbound with its sweet songs. कवि कहता है कि वो स्काईलार्क पक्षी से उन स्रोतों के बारे में जानना चाहता है जो कि उसे प्रसन्नता प्रदान करते हैं। वह उन पदार्थों के बारे में जानना चाहता है जो कि स्काईलार्क पक्षी को खुशी प्रदान करते हैं और उसके गीत को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये क्या हैं? क्या ये विभिन्न आकृतियां जो आकाश और धरती के दृश्य अलग अलग रूपों में धारण करती हैं वे हैं? क्या आम पक्षियों के प्रति प्रेम है या पीड़ा के प्रति अज्ञानता है? शैली के अनुसार मानव पीड़ा आदमी के बीच प्रेम की कमी के कारण है। यदि लावा पक्षी अपनी ही जाति को प्रेम करता है तो क्या ये सब जान करके कभी भी उस प्रेम के एहसास के बारे में लोगों को बता सकेगा और लोग उसे उसी प्रकार से सुन सकेंगे जिस तरह से वो भाव विभोर होकर आज स्काईलार्क पक्षी के बारे की गीत को सुन रहा है। थैंक यू ऑल. The poem is complete and the questions regarding this poem I will send you in the PDF format.